पारद श्लोकास् पारद टाइप्स रसो रसेन्द्रः सूतश्च पारद मिश्रकस्तथा इति पंचविधो जाताः क्षेत्रभेदेन शम्भुजाः। रस डेफिनेशन रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते जरा रुङ् मृत्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः। मम देह रसो यस्मात् रसस्तेनाय रोचते। रसेन्द्र डेफिनेशन रस उपरस राजत्वात् रसेन्द्र इति कीर्तिताः। सूत डेफिनेशन देह लोहमयीं सिद्धिं सूतो सूतस्ततः स्मृतः। पारद डेफिनेशन रोगपङ्काब्धिमग्नानां पारदनाच्च पारदाः। मिश्रक डेफिनेशन सर्वधातुगतं तेजोमिश्रित यत्र तिष्ठति तस्मात् स मिश्रकाः प्रोक्तो नानारूपफलप्रदाः। पारद दोष विषं वह्निर्मलश्चेति दोष नैसर्गिकाः त्रयाः रसे मरण संताप मूर्छानां हेतवः क्रमात् यौगिकौ नागवङ्गौ तौ तौ जाड्यात्मानपूर्वतौ औपाधिकाः पुनश्चान्ये कीर्तिताः सप्तकञ्चुकाः भूमिजा गिरिजा वारिजा द्वे च द्वे नागवङ्गजे द्वादशैते रसे दोषाः प्रोक्ता रसविशारदैः। औपाधिक दोष पर्पटि पाटिनि भेदी द्रावी मलकरी तथा अंधकारी तथा द्वांक्षी विज्ञेयाः सप्तकञ्चुकाः। ग्राह्यलक्षण ऑफ पारद अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाशः। नेसेसरी ऑफ शोधन फॉर पारद दोषहीनो यथा सूतो मृत्युज्वरापहाः साक्षात् अमृतमप्येव दोषयुक्तो रसो विषं तस्मात् दोषविशुद्ध्यर्थं रसशुद्धिर्विधीयते। इंपॉर्टेंस ऑफ अ शोधन शोधनं दोषहरणं संस्कारजं फलतेजसोर अभिवर्धनम्। पारद सामान्य शोधन एकेन लशुनेनापि शुद्धो भवति पारदाः पिष्टो लवणसंयुक्तो सप्ताहं तप्त खल्वके। पारद विशेष शोधन नागदोष शोधन धूमेष्टिका हट विलासिनीनां सूर्णैस्तु चूर्णाः परिमर्द्य सूतं प्रक्षालयेत् अम्लजलेन सम्यक् ततो रसो मुच्यति नागदोषम्। वङ्गदोष शोधन मृगेक्षणाङ्कोल निशोत्य चूर्णाः सूतो जहातीह तु वङ्गदोषम्। अग्निदोष शोधन चित्रो अग्निदोषं विनिहन्ति शीघ्रं त्रिफलाग्निनाशिनी। मलदोष शोधन दोषं मलोत्थं खलु राजवृक्षाः गृहकन्यां मलं हन्तिः। चापल्यदोष शोधन चापल्यहारी खलु कृष्णाधूतौ। विषदोष शोधन विषापहर्तिं त्रिफला प्रशस्ता चित्रकश्च विषम्। गिरिदोष शोधन दोषं गिरिसृषणमाशु हन्यात्। असह्याग्निदोष शोधन त्रिकंटको वन्यः सत्वदोषम्। अष्टादश संस्कार ऑफ पारद स्यात् स्वेदनं तदनु मर्दनमूर्छनं च उत्तापनं पातन रोधन नियमनानि सन्धीपनं गगनभक्षणं मानमत्र संचारणं तदनु गर्भगतधृतिश्च बाह्यधृतिः सूतकचारण स्यात् ग्रासस्तथा सारणकर्म पश्चात् संक्रमणं वेदविदाः शरीरे योगास्तथा अष्टाध्राता अत्र कर्मः। फर्स्ट वन स्वेदन संस्कार एम क्षाराम्लैरौषधैर्वा अपि डोलायन्त्रे स्थितस्य हि पचनं स्वेदनाख्य स्यान्मलशैथिल्यकारकम्। मेथड असुरी पटुकटुकत्रयं चित्रार्द्रमूलकैः कलांशैश्च सूतस्य काञ्जिकेन त्रिदिनं ऋतुवह्निना स्वेदः। मर्दन संस्कार एम उदितैरौषधैः स आर्द्रं सर्वाम्लैः काञ्जिकैरपि पेषणं मर्दनाख्य स्यान् बहिर्मलविनाशनम्। मेथड गुडदग्धोर्णलवणैर्मन्दिरधूमेष्टिका असुरीसहितैः रसषोडशांशमानैः स काञ्जिकैर्मर्दनं त्रिदिनम्। थर्ड वन मूर्छन संस्कार एम मर्दनादिष्टभैषज्यै नष्टपिष्टत्वकारकं
तन्मूर्छनं हि वङ्घादिभुजकञ्चुकनाशनम्। मेथड गृहकन्यां हरति मलं त्रिफलाग्नि चित्रकश्च विषं तस्मात् हेभिर्मिश्रैर्वारान् समूर्छयेत् सप्त। फोर्थ वन उत्तापन संस्कार। डेफिनेशन मृतस्य पुनरुद्भूतिः सा प्रोक्ता उत्तापन क्रियाः। एम स्वेधातपादियोगेन स्वरूप आपादनं हि यत् तद् उत्तापनम् इत्युक्तं मूर्छाव्यापत्तिनाशनम्। मेथड अमुना विरचनेन विशुद्धौ नागवङ्गपरिमुक्ताः सूताः पातनयन्त्रे समुत्थिताः काञ्जिकक्वातात्। फिफ्थ वन पातन संस्कार। एम उक्तौषधैर्मर्दितपारधस्य यन्त्रस्थितस्य ऊर्ध्वम् अधश्च तिर्यक् निर्यातनं पातसंज्ञमुक्तं वङ्गाहि सम्पर्कज कञ्चुकग्नम्। मेथड कृत्वा तु शुल्बपिष्टं निपात्यते नागवङ्गशङ्कताः तस्मिन् दोषमुक्त्वा निपतति शुद्धस्तथा सूतः। सिक्स्थ वन रोधन और बोधन संस्कार। एम मर्दनमूर्छनपातैः कतर्दितो भवति मन्दवीर्यत्वात् सृष्टाम्बुजैर्निरोधा लब्धाप्यायु न षण्डः स्यात्। मेथड जलसैन्धवयुक्तस्य रसस्य दिवसत्रयं स्थितिरास्तापने कुम्भे या असौ रोधनमुच्यते। सृष्टाम्बुजैर्निरोधेन ततो मुखखरो भवेत् स्वेदनादिवशात् सूतो वीर्यं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। सेवेंथ नियमन संस्कार। एम रोधना लब्धवीर्यस्य चपलत्वनिवृत्तये क्रियते पारदे स्वेदाः प्रोक्तं नियमनं हि तत्। मेथड इति लब्धवीर्यः सम्यक् चपलो असौ संनियम्यते तदनु फणिलशुनाम्बुजं मार्कवकर्कोटिचिञ्चिका स्वेदात्। एट् वन दीपन संस्कार। एम लेलेहिनो हि धातुश्च पीड्यमानो बुभुक्षयाः अमुनैर्प्रकर्तव्यं रसराजश्च दीपनम्। डोलायन्त्रे स्थापयित्वा रसेन्द्र क्षाराधैर्यत्पाचनं स्यात् तथा अयं ग्रासार्ति वा चारणे च प्रगल्भः शस्त्रघ्नैस्ता दीपनं सम्प्रदिष्टम्। मेथड भूप खग टङ्कण मरिचैर्लवण असुरी शीघ्रु काञ्जिकैस्त्रिदिनं स्वेधने दीपितो असौ ग्रासार्ति जायते सूतः। पारदगति जलगो जलरूपेण त्वरितो हंसगो भवेत् मलगो मलरूपेण स धूमो धूमगो भवेत् अन्या जीवगतिर्द्रावी जीवो अंडाधिव निष्क्रमेत् स तांश्च जीवयेन् जीवांस्तेन जीवो रसः स्मृतः चतस्रो गतया दृश्या अदृश्या पंचमी गतिः मंत्रध्यानाधीना तस्य रुध्यते पंचमी गतिः इति भिन्नगतित्वाञ्च सूतराजस्य दुर्लभाः संस्कारस्तस्य विषजा निपुणेन तु रक्षयेत्। जारणा परिभाषा। जारण हि नाम खालनपातनव्यतिरेकेन ग्रस्तघनहेमादिरसस्य पूर्वावस्था प्रतिपन्नत्वम्। मेथड द्रुतग्रासपरिणामो विड्यन्त्रादियोगताः जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिशाः। द्रुतग्रासक्षय एव चारण। इम्पोर्टेन्स ऑफ अ चारण। सूते गन्धादिनिक्षेपात् तत्तद्विधिविशेषताः गन्धाद्यं जार्यते एत्तु चारणं तदिहोच्यते। गुण ऑफ गन्धकचारितपारद। तूल्ये तु गन्धके जीर्णे शुद्धश्चतगुणो रसाः द्विगुणे गन्धके जीर्णे सर्वथा सर्वकुष्ठाः त्रिगुणे गन्धके जीर्णे सर्वजाड्यविनाशनः चतुर्गुणे तथा जीर्णे वलिफलितनाशनाः गन्धे पंचगुणे जीर्णे क्षयक्षयकरो रसाः षड्गुणे गन्धके जीर्णे सर्वरोगहरो रसाः। मूर्छना परिभाषा। तत्तद्विधि प्रभेदेन रसस्य अव्यभिचारताः व्याधिघातकता या स्यात् सा मता मूर्छना बुधैः। अव्यभिचारित व्याधिघातकत्वं मूर्छना। टाइप्स टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू रसतरंगिणी। निर्गंधा च सगंधा च मूर्छना द्विविधा मता।
ನಿರ್ಗಂಧ ಗಂಧರಹಿತ ಸಗಂಧ ಗಂಧ ಸಂಯುತ. According to Ayurveda Prakasha, Sagandha is of three types. Sagandha tu Bahirdhuma, Antardhuma, Nirdhumata, Trividha. According to Ayurveda Prakasha, Murchana is five types. Trividha api kevalam Gandhapishti, Gandhabadha, Gandhajirna, Rasagandha Kajjali, Dhatu Pishti Bhedena Panchada, Dhatu Pishtischa Kanaka, Rajata, Shulbha, Ghana Sattva Kalayasa Prabhedaihi ಪಂಚದ. ಅಪತ್ಯ ಫಾರ್ ಪಾರದ ಸೇವನ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಕರ್ಕಟಿ ಚೈವ ಕಲಿಂಗ ಕಾರವೆಲ್ಲಕಂ ಕುಸುಂಬ ಕಂಚ ಕರ್ಕೋಟ ಕದಲಿ ಕಾಕಮಾಚಿಕಂ ಕಕಾರಾಷ್ಟಕಂ ಏದಂತಿ ವರ್ಜಯೇತ್ ರಸಭಕ್ಷಕ.